as we approach to the penultimate day of the eISL Season 2, folks, things are definitely all rattled and riled up because tonight is the night where we find our last two remaining teams who make it to the playoffs. Welcome once again. My name is Fixes. I'm joined along with TTR. So, TT, three matches and two games that will be literally the decider. We have been talking about it since the past couple of weeks. And finally, we get our answers today. How excited are you? बहुत ज़्यादा एज यूजुअल, क्योंकि मैं रोज ही एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन आज का एक्साइटमेंट कुछ अलग रहेगा। सिर्फ मेरा एक्साइटमेंट नहीं, इधर जितने भी स्टेट्स है या फिर जितने भी स्टेट्स के इधर क्लब्स है, वो सब के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और स्पेशली आज जो गेम्स है, इस पे पता चलेगा कि इतने दिन के सफ़र का रिजल्ट जो है वो क्या इनके लिए मीठा होने वाला है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, आज अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस गया, देन जाके हम लोग प्लेऑफ्स के बारे में बातचीत करेंगे। नहीं तो फिर प्लेऑफ्स के बारे में बातचीत जो है वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन इन टीम्स को लेके नहीं करेंगे। तो बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। Absolutely. And before we have the evening starter, let's take a quick look at the format again. And I'm pretty sure most of you are well versed with it, but for the new viewers. So, like I was saying, tonight is the penultimate day of our league stages. So, we've got today is 25th of April. From 28th of February, we go on to 26th of April. We get our top 6 teams who make it to the playoffs, and we have it on 6th and 7th of May. So, that is there also, and we've got 6 clubs only participating. Whoever gets to be the winner of the eISL Season 2, both the players from the championship team get to play the FGS 2023 play tournament. So that is also on the line, along with the lion's share of the 33 lakh rupees that we have for you, out of which the winning team gets 4.5 lakh rupees. Second club gets 2 lakh rupees. Third and fourth share 75,000 each. And we move on to the schedule. We will, of course, for all the matches that we have in for you guys, we have one of those games where we see FC Goa trying to keep on their winning run, right? One of the only clubs, or the only club that hasn't even lost a game or has even drawn a game. So today they're going to be tested by an out of form East Bengal FC. We're seeing them after like almost 2 weeks, TT. एंड 2 वीक के बाद अभी जिस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं ईस्ट बंगाल एफसी को, वो उनके लिए दिन ब दिन और भी ज्यादा टफ होता जा रहा है। देखिए, हालांकि अभी क्वालिफिकेशन के रेस से तो बाहर हो चुके हैं, या क्वालिफिकेशन के रेस से तो आउट हो चुके हैं, लेकिन एफसी गोवा को फेस करना वो अपने आप में ही और भी ज्यादा टेंशन वाली बात है। तो जाते जाते अगर जीतने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी वो कोशिश भी शायद बहुत जबरदस्त करना होगा, उतना इजीली होगा नहीं। जो नेक्स्ट मैच है आज का सेकंड, वो है एटीके मोहन बगान वर्सेस हैदराबाद एफसी। और ये दोनों के दोनों क्लब्स एक दूसरे के खिलाफ जिस पोजीशन पे बैठे हैं, ये पोजीशन जो है वो इन दोनों ही क्लब्स फील कर पा रहे होंगे। अगर आज जो कोई भी जीतेगा दोनों में से, वो क्वालिफाई करेगा और दूसरा नहीं करेगा। इन 4 क्लब्स का आज होने वाला है इम्तिहान, जो आखिरी परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। आज इनमें से कोई 2 होंगे पास और कोई 2 होंगे फेल। बट चलिए एक बार नजर डाल ही लेते हैं लीडर बोर्ड की तरफ, एंड लेट्स फाइंड आउट folks that which are or rather where these teams are after all their matches have been played. So FC Goa, they'll be playing their 9th match, and East Bengal FC will also be playing their 9th also, regardless. Even if they win both their games, they're not going to make it to the playoffs. But for Hyderabad, Chennai, Kerala Blasters FC, and ATK Mohun Bagan, for all 4 of them, definitely the qualification is on the line. And I kind of have this feeling that we might see things boiling down to the goal differences, the ties, and all that. So I'm really excited for the evening, and I'm pretty sure you guys are also. But let's take a quick look at the matchups. Who's gonna face Vanshaj, and who's gonna deal with the wrath of Adi Sima? So there you have it. Akshat opening things up for East Bengal FC, followed by Beno 7, who takes a fight against Adi Sima. So another David versus Goliath battle. And we also have an East Bengal FC fan right now. Are you still a fan of East Bengal FC? Obviously, why not? Why not? देखिए, ऐसे उतार चढ़ाव तो चलता रहता है सीजन पे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि फैन नहीं रहेंगे। फैन तो हम रहेंगे जितने दिन तक का है
पृथ्वी पे, बट देखते हैं अभी आगे किस तरीके से खेलते हैं ईस्ट बंगाल एफसी। इस साल के लिए तो सिनेरियोज थोड़ा डगमगाहट हो चुका है, लेकिन वी शर्मा के खिलाफ अक्षत, देखिए एक बात के लिए कह सकते हैं कि प्रेशर नहीं है ईस्ट बंगाल एफसी के ऊपर एंड ऑल, ये सब तो ठीक है, बट आज मैच है कि इनके साथ एफसी गोवा के साथ, जो कि किसी के खिलाफ हारे ही नहीं है। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि ओपोनेंट क्लब के ऊपर प्रेशर है नहीं है, कौन से मेंटल स्टेट पे है नहीं है, उनको जस्ट इससे फर्क पड़ता है कि उनको जीतना है। और वो अगर जीत जाते हैं आज के इस गेम को, तो वो टॉप पे फिनिश करने वाले हैं पॉइंट्स टेबल। फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ जो भी रिजल्ट आए नेक्स्ट गेम पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो टॉप पे ही रहेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पिछला गेम जो था वो जीत नहीं पाए थे इसकी वजह से। Yeah, and we have seen upsets, right? We have seen upsets. We are on course to maybe see another one. So that's going to be there. But yeah, FC Goa, they're going to be the most favorite team right now. This time, in fact, inside the eISL, because a lot of clubs have already tried their hands on them, but nobody has succeeded. Tomorrow, we're going to witness that ultimate showdown between FC Goa and Northeast United FC, for which I'm also excited about. But yes, coming back to this particular matchup. So a lot of clubs we've seen them playing, but after that a little bit of a hiatus that we had, then once we resumed, we did not see any of East Bengal FC's games. Now that time span that they had, they might be working on their game, trying to further improve it, because hey, for the players this is another tournament, right? They still have to remain sharp, they have to hone their skills, and I'm just hoping that I get to see some improvement, especially from our lovely Benno 7, because this player, last season fabulous, but this season has been pretty iffy about him, and he's not pretty pleased. I'm pretty sure he's gonna come back the next season being the star that he still is for the club, right? Just barring a few games. Yeah. I mean, Benno 7 had a really nice start, but I do not know what happened in between. Maybe it was the servers that messed up with him, or maybe it was his internet, or maybe the defense was just split open. But regardless, we are on with the games, folks. It is going to be V Sharma against Akshat. FC Goa attacking from left to right, and East Bengal FC from right to left. शुरुआती ही स्टेज पे एक मुश्किल कहने की क्रिएट हो गया था, हालांकि अभी भी प्रेशर तो बना हुआ है इस बंगाल एफसी के ऊपर। रोनाल्डो के साथ जा रहे थे, बट फाइनली टैकल करेंगे। देखिए वी शर्मा का एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है कि वो हमेशा बैकलाइन पे 5 प्लेयर्स को ही खिलाते हैं, वो कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ तो अभी के लिए सबको पता चल चुका है, तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो उस तरीके से प्लानिंग करके आते हैं, लेकिन वी शर्मा किसी को भी बख्शते नहीं है। वो गोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्कोर करते हैं। आ चुके हैं एक बार अटैक पे, फिर से मौका बनता हुआ दिख रहा है विथ रोनाल्डो। काफ़ी शानदार ट्रेवलिंग दिखा रहे थे, बट अभी भी वो ओपनिंग मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मिल भी सकता है। मिल सकता है क्या, निकाल लेंगे। और उसी के साथ पहला गोल गेम शुरू होने के जस्ट 10 मिनट के अंदर आ गया। और वी शर्मा कि इधर इतना इजीली, इतना बटरी तरीके से ये गोल स्कोर किए, देख के लगा नहीं उनके लिए कोई प्रेशर। ओह, नॉटमेक किया गया था इधर वेंडेसर को। Yeah, just tapping it past and made it look so easy. And that's V Sharma for you, right? He scores goals for fun, and this is where even Akshat burst out for a quick laughter. And at this point, Akshat has had a decent season in terms of what you would expect from him, being one of the rather latest additions to the FIFA community. It was the last season's eISL where we saw him play for Kerala Blasters FC. We have seen Akshat grow, and this is a much more matured version of Akshat that we got to see. But sadly, things clearly did not work out for them. But right now, Akshat just wanting to kind of redeem himself, because this is what he had done in the last season also. Those final few games, that is where he actually won games for Kerala Blasters FC even when Lokmanya was struggling. So cannot rule this player out really. If he manages to beat them, then things are completely gonna change, especially for FC Goa, because when you lose to East Bengal FC, then that's definitely gonna hit on your morale. Now that's going to be a long shot, to be honest, with the way V Sharma has been playing, and if things go south, there is always Adizima, and of course you've got that co-op matchup of FC Goa, which is to be honest quite ludicrous. और आधी सीमा का परफॉर्मेंस अभी तक अगर देखा जाए तो उनका भी टॉप नॉच रहा है, तो प्रेशर उतना ज़्यादा आता नहीं है।
कोई भी सिंगल प्लेयर के ऊपर, वो चाहे वी शर्मा हो या फिर आदित्य शर्मा, क्योंकि दोनों को ही पता है कि उनके जो को प्लेयर है वो काफ़ी शानदार है और वो संभाल सकते हैं सिचुएशंस को। तो इसी वजह से प्रेशर भी नहीं आया और वो अनबीटन तो अभी तक रही हैं। बट देखते हैं किस तरीके से आगे खेलते हैं। बट आज का जो शुरुआत है वो तो बहुत ही अच्छे नोट पे ऑलरेडी हो चुका है। पहले 10 ही मिनट के अंदर पहला गोल इधर दागा गया था और अभी के लिए अक्षत देखिए प्रेशर पे तो है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है। दूसरा गोल भी आ सकता है। एडवांटेज साथ इधर आगे गए, वैसे उतना सारा एंगल था भी नहीं अगर देखा जाए तो, थोड़ा श्रिंक हो गया था राइट हैंड साइड से, बट खतरा अभी भी है। लूशियो लूशियो ये किस तरीके का गोल था? ब्रांडन स्टार क्या कर रहे थे? ओह माय गॉड। Oh, this is brutal now. V Sharma scoring goals with Lucio, and that too with a step over, created that extra little space, and taps it in for that near post. Just shoots it away, and Van der Sar left watching, and V Sharma, and in fact FC Goa, just like that, they've gone 2 goals up, and right now Akshat would be wanting to score another one and definitely not try to concede anymore. He's done his part. He's tried to hold on to V Sharma, but he's a force of nature. Quite difficult to stop, quite hard to deal with. And now he's on another attack. So V Sharma has been pretty calm, right? So far, we've seen him making those, he's been shuffling the ball along, and this could be a golden chance for Akshat. He better not whiff this, takes that shot, and yes, he scores, and East Bengal FC give one back, and it is 2-1 on the score lines. Beautiful. बहुत शानदार। और फाइनली इस गोल के साथ कहीं ना कहीं एक चीज तो वो बता के गए कि यस, ये जो लड़ाई है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और ये एक तरफा भी नहीं है। तो इधर हम तो है अभी भी, देखते हैं इस गेम पे क्या होता है। बट देखिए एक बार फिर से अटैक बनता हुआ, बहुत शानदार लॉब खेला गया, भी करेंगे, गोल भी होगा। ओह माय गॉड अक्षत, व्हाट अ कमबैक, 2-2 और बेहतरीन फॉलो थ्रू पास था, व्हाट अ फिनिशिंग। और अक्षत वो क्या कर गए ये? He's not just scored the equalizer, but also poked the bear. Now, in the world of FIFA, you're not supposed to do that Makiti celebration because, well, players do not take it with a pinch of salt. I'm pretty sure V Sharma, he could not believe himself when he conceded that, and he's en route. Now, since you have already poked the bear, better deal with his wrath. But Akshat, just taunting him. Come on, buddy, give it a try. And wow, what a game we have on our hands, folks. And suddenly, FC Goa, the earth's trembling for them, especially for V Sharma. He did not see this coming. But nice passing routine going on over here with R9, looking for a cutback. Goes towards Messi. Just trying to dribble the ball past, and with R9 has space on Ronaldinho. Almost created. Yes, he does, and just like that. Oh my goodness. Akshat starting to do the unthinkable. He is doing the impossible. He has now taken a lead against FC Goa. 3-2 the scoreline. Oh, what a play. Oh my God. अक्षत, लाइक ये तो प्रेडिक्टेबल नहीं था जो वो कर रहे हैं अभी। रोनाल्डिनियो को खिलाया जा रहा है विद रोनाल्डो और अटैकिंग मिडफील्ड के पोजीशन पे इधर खिलाया जा रहा है एम्बापे को। पोजीशनिंग के मामले में जो ड्रिबलिंग वो कर रहे हैं इंडिविजुअली विद रोनाल्डिनियो, जस्ट ऑसम था। और ये रिप्ले, ये फर्स्ट हाफ का रिप्ले है जिसपे 5 गोल्स आ चुके हैं ऑलरेडी और 5 में से भी कमबैक हुआ है। 3 गोल आए हैं। पहला गोल बहुत ही ज्यादा कैजुअल, मतलब कैजुअल हम लोगों को वेंडेसार दिखा, बट गोल तो बहुत अच्छा था। उसके बाद लूशियो से ये भी अनएक्सपेक्टेड गोल था जो कि क्या गया, लेकिन उसके बाद हुआ कमबैक स्टोरी स्टार्ट। और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट हाफ के ऊपर कमबैक भी करेंगे और उसके बाद एडवांटेज भी ले लेंगे। इधर क्या शानदार खेले हैं अभी तक अक्षर। I mean, V Sharma's defense is all over the place. In fact, walking on eggs this moment. I think TT, you were the one who talked about how formidable his defense has been so far, having 5 men on back, and now
Akshat starting to go score goals for fun, and those were three quick, successive goals, right? Every single time Akshat breaks out for an attack, he scores. And now you could see that calmness, you could see that composure. Where was this Akshat? Where was this Akshat all along? I mean, had he replicated even 80% of what he's doing right now, I mean, I'm pretty sure East Bengal FC would have been at a much better place and could be one of the contenders of making it to the playoffs. But better late than never. Akshat seems to have made a comeback over here, but we still have one more half to go, and this is where V Sharma is going to take all his time out, completely restructure, rethink his strategy with what Akshat has been trying to do, and I must say he's been finding room very well. Those lob through passes, those through passes, those grounded ones, those cutbacks. He's got a lot of variation, and he is playing literally the best FIFA of his tournament. बहुत श्योर, और जिस जगह पे आके कर रहे हैं वो किसके स्टेट्स भी खिलाफ कर कहीं रहे ना हैं? कहीं अभी के, यस वही बात है, जिसके खिलाफ वो कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई कर नहीं पाया था अभी तक, बट वो अभी तक जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल है। और स्पेशली देखिए इधर पासिंग के ऊपर नहीं, हम लोग क्या देखते हैं कि पासिंग जो है वो काफी ज्यादा कराया जाता है डिफेंस लाइन के आसपास आके, तो वो 5 डिफेंडर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ड्रिबल कर रहे थे विद रोनाल्डीनियो, उस जगह पे आपका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और आप चाहते हो कि एक ही डिफेंडर के साथ आप जाओ, फिर मल्टीपल के साथ जाओगे तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, तो उसका पूरा फायदा उठाए। और अक्षत क्या शानदार खेले, बट कुछ कुछ चेंजेस आते हुए दिखे, और ये चेंजेस जरूरी था शायद इधर, बट देखिए एक बार फिर से बॉल छीना गया, और ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, बहुत जल्दी सोच रहे हैं और बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन पे जाते हुए दिख रहे हैं। वेरा बहुत दिन जब से ज़िनेडिन ज़िडान आए तब से वियरा को उतना खिलाया नहीं जा रहा था, फिर से एक बार अटैक पे चले ही गए थे, बट फाइनल टाइम पे इंटरसेप्शन आया, और अभी के लिए काउंटर पे वी शर्मा, लेकिन डिफेंस अपना जो स्ट्रक्चर है वो फिर से बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन अटैकिंग पे जो प्लेयर्स है वो भी इंक्रीज हो चुका है, तो एफसी गोवा के पास एक अच्छा मौका है कि वो इधर से एक गोल स्कोर करे। निकोलाइजर दाग रहे, बात कर रहे थे और गोल भी किए, इक्वलाइज भी हो गया, तो रैपिड फायर गेम चल रहा है ऐसा लग रहा है, और गोल्स के बाद गोल्स करे जा रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स, एंड बहुत इजीली भी। Yeah, you could see the fire in V Sharma's eyes. Well, Demons Unleashed seems like not really happy with scoring that goal. Quite angered on how he has opened up his defenses, where even Akshat, he's leaving no stones unturned. Both these players are just going at each other, exchanging blows after blows. And you can see a very tightly contested match. 4 shots have been taken, out of which 3 have been converted for both these lads, and that is how good both of them have pretty much been. And if you talk about the pass goal that he scored just before the halftime whistle, we could see clearly, how patient V Sharma was with his build-up. He did not panic at all, right? He had almost broken free for a counter. Then he realized that there's no point in giving that pass to Jairzinho, and he might just get stopped. Instead, he preferred to build the attack from the right side of the play. He started chaining passes with Ashraf Hakimi, and eventually with Mbappe. Did not go for any extra passes, rather went for a step over there, created a little bit of a room, and he knew the team of the year, Mbappe, is just so cracked, and it was a far post finish, a grounded one at that, and just like that, FC Goa are back into this game. Now, commencement of the second half, TT, this is where I hope we get to find a winner. This is where somebody, needs to, either of them needs to just wake up their defenses and score that extra one winner, and you're good to go, because right now we're still even Stevens. यस, शुरुआत हो चुका है सेकंड हाफ, और उसी जगह पे देखिए दूर से ट्राई करते हुए जा रहे हैं। आज अक्षत सब कुछ करेंगे, या आज अक्षत सब कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए पॉइंट्स है। जाते जाते अगर वो पॉइंट्स लेके जा पाते हैं तो उनका पोजीशन पॉइंट्स टेबल के ऊपर अच्छा होगा, जिससे कि थोड़ा का मोरल बूस्ट मिल सकता है बाद के लिए। इस बार बॉल लेके बॉक्स के बाहर चले गए थे वी शर्मा, बट वी शर्मा के जो 5 डिफेंडर्स हम लोग को देखने के लिए मिलते थे वो अभी चेंज हो चुका है। आप देखिए फॉर्मेशन पे इधर चेंज हुआ,
और अभी के लिए सिर्फ 4 ही डिफेंडर आ रहे हैं और एक जो एक्स्ट्रा डिफेंडर थे उनको अभी बाहर कर दिया जा चुका है। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। बीच से निकलते हुए एम्बापे, एक पास, रोनाल्डो गोल पे ऑन टारगेट नहीं था, नहीं तो बीट कर चुके थे वैन डे सार को। That was such a nice driven pass there, finding Mbappe over there, and all he had to do was just get in, and nice attacking instinct shown by V Sharma. But well, Akshat hasn't been far behind. This man is getting those chances. He's also converting it. And at this point, let's see what Akshat can really pull off. So far, he's been spectacular. And I'm pretty sure even Ben07, Shantan must be channeling some of that energy, some of that positivity into him. And we get to see some amazing FIFA from his side as well. But at this point, question marks on why he did not go for that header with Ruud Gullit. He kind of had beaten his marker and could have gone for a quick, fast one. And with Ruud Gullit, that you kind of have that header trait also. You've got that height, you've got that physicality. He could have done, but that little extra overthinking there hurting him. But that happens, in the spur of moment. It tends to go wrong. And nothing to really worry about, as even Akshat has been phenomenal tonight. अभी तक जिस तरीके से गेम चला है उससे एक चीज तो पता चल रहा है कि दोनों में से कोई भी इसी को छोड़ने के लिए इधर राजी नहीं है। बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी आज देखने के लिए मिल रहा है अक्षत के गेम से, जो कि हो सकता है कि प्रेशर की वजह से इसके पहले मिसिंग था, बट आज जो वो क्रिएटिव गेम दिखा रहे हैं वो लाजवाब देखने के लिए मिल रहा है और जस्ट अलग अलग लेवल का आउटकम अभी तक हम लोगों को देखने के लिए मिला है। वेरा देखिए, वेरा का यूज कम हो गया था, एक बार फिर से सेम मूव बार बार यूज कर रहे हो। All right, I think TTV Sharma needs to be watchful, because you know what Ruud Gullit can do from there. If he gets the position at the right spot, he might take a sucker punch there. But now V Sharma focusing on his attack, and he's building his numbers there. He's getting enough men now. Again, just trying to shuffle the ball. Nice passing going on, and he takes a grounded one. Very difficult sometimes to deal with. But Akshat quite fast on his triggers, made those play switches absolutely right. And yeah, now he's broken free. He's going out on his counter-attack, and both these players. We haven't seen a lot of fights going on in the midfield. Rather, it's been pretty end-to-end. Would you agree? बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल एग्री। और जिस तरीके से अभी तक सिचुएशन इधर चल रहा है, इतने गैप्स ढूंढ किधर से रहे इधर अक्षत, जिस तरीके से वो पासेस निकाल रहे हैं। और उसी जगह पे अगर देखा जाए तो वी शर्मा के डिफेंस में अगर इतने ही गैप्स हैं तो बाकी के प्लेयर्स क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे। सो ये सारा क्वेश्चन जो है वो अभी फिलहाल के लिए घूम रहा है, लेकिन ये फियरस अक्षत है, इनके मन पे बिल्कुल भी डर नहीं है कि हार गए तो क्या होगा। और देखिए, इस बार गोल करने का मौका खेल गए वैन डे सार के साथ, रोनाल्डो के साथ भी फिनिश कर सकते थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा पास जस्ट चौंकाने के लिए था और वैन डे सार जस्ट गिरते पड़ते देखते रह गए और बॉल चला गया नेट्स पे। काफी शानदार। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि फॉर्मेशन पे इधर चेंजेस हुए, कि डिफेंस लाइन से एक प्लेयर को हटा के मोस्ट प्रोबेबली वो एडा मिलिटाओ थे जिनको बिठाया गया था, और उनको बिठा के इधर 3 मिडफील्ड के साथ आया गया है और उसके साथ 3 अटैकर्स, ऑब्वियसली राइट विंग, लेफ्ट विंग एंड एक स्ट्राइकर। सो ये चेंज के बाद काफी ज्यादा स्टेबल तो दिख रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं कि एकदम ही अटैक नहीं बन रहा। अक्षत फिर भी इधर जो बीच में गैप्स है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए दिख रहे हैं। At this point, I'm just hopeful that Akshat gets in Erling Haaland. You know what he can pull off, right? And that one run, that physical prowess can certainly help him. Both these clubs ought to be making their changes. I'm pretty sure V Sharma had exhausted his timeouts in the first half itself, chaining and making sure he started from scratch, because he clearly figured that narrow formation of Akshat was just getting through his defense just like a hot knife through butter. So at this point, he had to make those suitable adjustments, which I'm pretty sure he did. And there you see. So the Haaland also comes up for both these clubs especially. And over here, what FC Goa would be hoping for, rather the intention shall be clear, that they need to score one more goal and then maybe go for a 5-4-1 back again.
But for Akshat, it has to be for him to get himself back into the game. I mean, we would love it. It is the underdog story that might turn true. And imagine a club like FC Goa, who have been challenged by so many of these clubs, everybody apart from Northeast United FC, but none could surpass them. But if today's Bengal FC manages to best them out, this could be the biggest upset of this season. हाँ, और देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं। अभी भी देखिए अपसेट तो बहुत दूर है, क्योंकि इस गेम पे फिर से एक बार जो एडवांटेज है वो ले चुके हैं रोहित शर्मा। यूसीबीओ को लेके आया गया है। केविन डी ब्रुयना आते हुए दिखेंगे। फ्रेश लेग्स 3 आ चुके हैं ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। बेल को लेके आए हैं। तो फाइनली जो हम लोग कह रहे थे बहुत दिन से कि न्यू कार्ड्स नहीं दिख रहे, बट फाइनली गैरेथ बेल आ चुके हैं और 93 कार्ड भी नो राइट विंग के ऊपर कितना शानदार इफेक्टिव एफर्ट वर्जिल वैन डाइक के साथ रन निकालते हुए एम्बापे के लिए पास आ गए। एम्बापे कंट्रोल नहीं था। Yeah, I mean, Van der Sar at the last nick of time just kind of was trying to screen him out and did not make it comfortable for Mbappe. And yeah, I'm pretty interested to see where actually he's going to be playing his Gareth Bale. Is it going to be on a fullback or is it going to be a little ahead? Because we know it is the end of an era for Gareth Bale. And there you go, just like that with Erling Haaland. He scores Akshat in those final moments of the game, and you could see that disbelief from B. Sharma's face erupting out, and this is why he was kind of left stranded into thinking, what on earth was Ashraf Hakimi doing there? Why could he not save the ball? Why could he not beat through? That is why we say, Erling Haaland tends to do the unthinkable sometimes, and he's done that tonight. And East Bengal FC, they have scored an equalizer, and a pretty late one at that. And the final few attacks remaining, and this could be it. If Akshat got himself over the ball, Erling Haaland could have beaten through. But now this is a must-do chance for V. Sharma. Paces in with R9. A little bit of a ball roll there. Passes it on towards Bellingham. Finds Erling Haaland. Will take that shot. And FC Goa. Alright, cannot stop them from winning, can you? As V. Sharma has scored another 90th minute winner over here, TT. What a goal. देखिए फिर भी इधर डिफेंड करने के लिए जा रहे थे, अगर आप देखें तो कंट्रोल कर लिए थे इधर मोस्ट प्रोबेबली हकीमी को, नहीं वैन डाइक थे। वैन डाइक को कंट्रोल करके लेके जा रहे थे क्योंकि उनको पता चल गया था पास आने वाला है, लेकिन थोड़ा लेट हो गए लेके जाते जाते। और उस टाइम पे हालैंड को उधर अगर बॉल मिलता है वो तो फिनिश करेंगे ही करेंगे, और वही हुआ। 2 मिनट का मिला है एडेड टाइम, जिसका कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा शायद, क्योंकि इतना जल्दी गोल स्कोर करना बहुत टफ है। आखिरी चांस, और यस रोडोलीद पुश किए, थ्रो इन। अभी भी बॉल कंट्रोल ईस्ट बंगाल एफसी के पास। या ये एक लास्ट सेकंड गोल हो सकता है, बट नो, क्योंकि ये पास जो है वो प्रॉपर था नहीं डी ब्रुयना के लिए, तो इसी वजह से फाइनल विसल बजा। और बहुत अच्छा गेम था कहने की, अगर देखा जाए ईस्ट बंगाल एफसी के जिस तरीके का सीजन गया है उस हिसाब से आप एफसी गोवा के सामने उतर रहे हो, जो कि अभी तक एक भी गेम हारा नहीं है, और वो भी वी शर्मा के खिलाफ, और आप 4 ऑल करके गए थे आखिरी 88 मिनट्स तक। तो बहुत अच्छा गेम था कहने की ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से। जी हाँ, काफी उम्दा। I mean, I must say I was pretty impressed with how good Akshat was. Of course, things need to be worked out on his defenses. And hey, it's V Sharma you're up against. We can cut some slack. Nothing to really scoff at Akshat. I loved him. Of course, V Sharma barely just edging away with a win over here. It was a nail biter. I'm pretty sure V Sharma must be wondering what is going wrong, and I'm pretty sure all the other players, deep down under, would have spotted all those cracks. And I'm pretty sure Northeast United FC, they must be paying some close attention for tonight's game. And yeah, V Sharma, we could see his defenses open up, especially in that first half on 3 occasions, right? And then in the second half, both these teams, in fact, both these clubs made certain adjustments, got themselves back into. But what I loved about Akshat was the variation of plays. He was
trying to think. We also saw him trying to take a few shots out of the box. He was trying to change the passes. But when it comes down to experience and composure, that's where V Sharma edged out on him, and that is how he scored that win. उसी के साथ हो गया हमारा मैच नंबर 1 कहीं ना कहीं खत्म, लेकिन ये मैच नंबर 1 जिस तरीके से था, लाइक स्पेशली फ्रॉम द साइड ऑफ अक्षत, वो काफी अच्छा था। लेकिन देखिए कोऑप के ऊपर मुझे लग रहा है कि इधर एफसी गोवा जो है वो एक अच्छा खासा लीड रखने वाला है, क्योंकि कोऑप पे आपको वो कोऑर्डिनेशन चाहिए जो कि हम लोग को थ्रू आउट द सीजन ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से उतना खास दिखा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड एफसी गोवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि वो पहले 2 गेम पे सील कर देते हैं, पूरा काम तमाम कर देते हैं ओपोनेंट क्लब्स का। तो वो तो बहुत अच्छे खेले ही है अभी तक कोऑप पे अगर भाई एनी चांस ड्रॉ निकाल देते हैं ईस्ट बंगाल एफसी, तो मुझे लगता है कि आखिरी गेम पे जाके लाइक शायंतन का जो बैनर 7 है वो चार्ज अप हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर कुछ अलग ही आ जाएगा। लेकिन बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। और पहला गेम जिस तरीके से गया, वैसे वो लोग एक्सपेक्ट किए नहीं थे कि अक्षत इतना सारा गोल कर देंगे और इतना शानदार खेलेंगे। It was a lot of goals coming in. As we take a look at the scorecard, it was goal galore, as you can describe it. A 5-4 scoreline where V Sharma just winning by narrow margins, just that one goal differentiating the two over here. And from here onwards, of course, I mean, V Sharma will be content that yes, he scored a W for himself, has managed to score 5 goals, but at the same time needs to start working on his defenses, because if Akshay could do it, I'm pretty sure Sharansh Jain or maybe Imad could just break in, and not just break in, could go on to beat V Sharma, which has happened on a few occasions. Few players have managed to best him out or get draws, and then eventually, Adizima sort of comes in and saves the day. But the co-op, the strongest club so far, FC Goa, now going up against East Bengal FC, who have been also looking quite sublime. I'm pretty sure Beno 7, like you said, he must be pretty charged up. He knows, because him being the local boy and him being a supporter right from his birth for East Bengal FC, he had to shoulder that heavy responsibility. And East Bengal FC, they come with a lot of fandom there, a lot of people, including you, who, if you do not win, kind of really are not pleased with. But yeah, I think at this point, that was too much for East Bengal FC's players to handle, especially for Shantan, because he sort of understood the gravity of situation. And I think the nail in the coffin was that Kolkata derby. Ever since, we haven't seen that spark out of Shantan, because earlier on we used to say that he used to be Mr. Dependable. Every single time his club needed him, he was there. But seems like he hasn't gotten over the horrors of past, and hopefully he must be taking it as a fresh new outlook, with a fresh new approach, and this works out hopefully, because Beno 7 kind of really breaks my heart to not see him perform, and I know he's capable of a lot more than his results speak. As we begin with the co-op game, TT, what do you think? Who's gonna back the win in this one? बहुत टफ है इधर कहीं ना कहीं अभी के लिए बोलना एज अ फैन, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए इधर पूरा लग रहा है कि एफसी गोवा के पास ही शायद जाएगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि एफसी गोवा अभी तक के बेस्ट क्लब रहे हैं अगर हम लोग बात करें कोऑप की, क्योंकि वो सील कर दिया। लाइक उनके 8 गेम्स उन्होंने खेले, उसमें से शायद 6 गेम्स उनके पहले ही 2 गेम पे इधर खेलने की हो गया है सील। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हार ही नहीं है काइंड ऑफ। तो देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। वैसे सरप्राइज तो दिया ही है अक्षत ने, तो क्या एक और सरप्राइज वेट कर रहे हैं हमारे लिए, वो देखना होगा। बट इस बार आधी सीमा आ चुकी है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आधी सीमा का जो क्रिएटिविटी है वो कुछ अलग लेवल के निकल के आते हैं, और उनकी तरफ से ही वो हम लोग को थ्रू बॉल ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जो लॉन्ग थ्रू बॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। फिर उसी के साथ जर्मन क्रॉसेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो उस जगह से प्रॉब्लम्स तो होंगे। देखिए ईस्ट बंगाल एफसी का जो डिफेंस है वो कंटिन्यूअसली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा रहा है, साधारण रहा है, तो उस जगह से किस तरीके से बाहर निकल के आ पाएंगे वो देखना होगा। आज डिफेंस जो है वो एकदम स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट वो 2 से कम गोल जो है वो लाइक कंसीड करे, एंड उसके बाद जाके तो फिर स्कोर करने की बात आएगी। बट देखिए बीच में से मौका, बट इस बार ऑफ साइड ट्रैप पे फंस गए।
a quick chain of passes going on between the players of FC Goa. And at this point, I barely even think they talk to each other. They know when to give a pass, when to receive one. And Adi Zima, the kind of crosses he goes for, those aerial balls that come in, that is something that both Akshat and Beno 7 must be on the lookout for. Cannot let that happen. That's the variations that FC Goa produces, which sort of catches their opponents off guard, and suddenly they concede a goal. But this time, quite a patient build-up from their side. Today we're seeing a much more matured version of FC Goa. If they weren't already the best, but wanted to, perform a step over with a Mbappe, a skill move, and maybe take a shot. But I think Akshat and Beno 7 read right through it, as a result of which they've managed to start building up on another attack, which still will resume after this throw. कैप्टिविया यूज किया जा रहा है और अपने ही प्लेयर्स के बीच में धक्का खा के बॉल आउट ऑफ कंट्रोल गया और एम्बापे उधर नहीं मिल पाया था एम्बापे को। और जब आप ये प्रेशर पास देते हो लाइक दूर से, तो उस टाइम पे कभी कभार हो जाता है कि आपके प्लेयर्स जो है उनके थोड़ा बाजू से निकल जाता है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बॉल। एंड वही चीज़ हुआ, अगर इधर एम्बापे के पास जाता तो शायद है वो कुछ हम लोग को वंडर्स होता हुआ दिख जाता। देखिए लूसियो के साथ जो कंट्रोल इधर दिखाए डिफेंस के ऊपर, बहुत शानदार, प्रॉपर टाइमिंग में मौजूद थे। उन्होंने पहले ही पता लगा लिए थे कि लाइक एज्यूम कर लिए थे कि इधर से एक पास आने वाला है, तो काफी अच्छे खेल रहे हैं। बट इस बार मौका डिफेंस किया जाएगा। ओह माय गॉड, ईस्ट बंगाल एफसी ये गैप में बहुत कम करके आए लग रहे हैं। Yeah, I think this is the kind of an improvement we wanted to see from their side, and this time even looking quite structured, even defensively. They've kind of watched a lot of games of FC Goa, know what they want to do, and have their defenses set accordingly. Quite difficult to defend when you're in co-op, really, and it makes a whole lot of difference, right? And over here, I think FC Goa still quite comfortable, if I must say, who's been the stronger club so far. It has to be FC Goa. Just before R9 could take a shot, and they're keeping their defenses quite tight. What we can see is they're not charging in for those early tackles, City. Rather, they're just waiting for either Adi Zima or V Sharma to perform that skill move, and that is where they take that narrow window of opportunity and just make that defense there. And that has been making sure that FC Goa are kept at bay, because it's 30 minutes already into the game, and FC Goa, despite creating numerous chances, haven't been successful even for once. एंड यही तो सबसे ज़्यादा इधर प्रॉब्लमेटिक हो रहा है एफसी गोवा के, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे क्या होता है, एफसी गोवा को हम लोग बार बार देखे हैं कि पहले 20 मिनट के अंदर कम से कम वो एक गोल दाग देते हैं। ज़्यादातर टाइम ऐसा ही हुआ है, लेकिन आज उनको चांस ही नहीं मिल रहा। और उसी जगह पे ईस्ट बंगाल एफसी एक बार फिर से अटैक बनाते हुए, क्या ये अटैक फिनिश कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे गोल पे? कैप्टिविया टुवर्ड्स रोडुलीत, ऑफसाइड हो गए इस बार। Breaks your heart, doesn't it, TT? Especially when deep down under your heart says one thing, the mind says the other. Conflict between two organs, and somewhere deep down we know at the back of our heads also, you want your heart to win. You want East Bengal FC to kind of maybe best out FC Goa tonight, and we all want to see that happen. We all want to see at least one club beat them, and nothing against the FC Goa fans, but this looks so broken, right? This club at this point feels like a cheat code into the tournament, and that is how good V Sharma and Adi Zima have been, especially when they're facing Akshat and Beno 7 from East Bengal FC, a club that is pretty much out of this tournament, just playing the consolation games. We suddenly see a whole new dimension of FIFA being played from these two lads. It kind of brings joy in your heart, just like a hot plate of some piping rasagullas. बिल्कुल बिल्कुल। और उसी जगह पे देखिए, एक चीज़ मैंने फॉलो किया कि जो अपने क्लब पे लाइक जब हम लोग को आईएसएल देखने के लिए मिला था, उधर जिस तरीके का परफॉर्मेंस निकल के आया, कुछ उस तरीके का सिमिलर फॉर्म हम लोग को इधर आईएसएल के अंदर भी देखने के लिए मिला है, जो कि कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ
देखने के लिए मिल रहा है। तो एफसी गोवा अभी के लिए तो एकदम टॉप पे चल रहे हैं, बट देखते हैं किस तरीके का आउटकम निकल के आ पाएगा। बट ईस्ट बंगाल एफसी अपने नॉर्मल गेम्स में, जो फुटबॉल गेम्स उनका चल रहा है, उस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी के लिए दे रहे हैं। क्या वो eISL पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, वो आज देखेंगे, जो कि अभी के लिए तो दिख रहा है। देखिए, जीतना ही हमेशा सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी के लिए जो है इस टीम को रोकना मुश्किल है। बात कर रहे थे हाफ टाइम के जस्ट पहले, व्हिसल बजने के जस्ट पहले ये गोल आया और उसी के साथ साथ स्कोर लाइन बन चुका है 1-0 और काफी शानदार ये गोल था। हालांकि उधर बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आ गए थे, डिफ्लेक्शन मिला और एम्बापे उस जगह से खाली गोल था। खाली गोल पे तो कोई भी इधर मिस नहीं करेगा, उन्होंने भी नहीं किया। तो फर्स्ट हाफ खत्म होता है 1-0 के साथ और कहने की एफसी गोवा यही गेम पे सील करना चाहेंगे इस पूरे के पूरे BO3 के सिनेरियो को कि इधर ही जाओ, फिर बाद में देखा जाएगा नेक्स्ट मैच पे जो भी हो। हालांकि आधी सीमा बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, बट 1-0 हो चुका है। Yeah, and you could just see the possession numbers, right? 68 to 32. I think one of the most dominant halves of FC Goa, but still that 1-0 scoreline over there. And there you see 13 tackles have been made. So I think East Bengal FC have been working out on the defenses so much. FC Goa, they have been pretty much trying to, just keep on attacking. But East Bengal FCs were the bastions of defense, really not letting things break until that previous goal just before halftime. Conceded one. Now on the lookout for maybe an equalizer and a good chance, and they go for it. They go for it with Jairzinho, get that pass perfectly delivered, and he rockets his way, just drives it and goes for a goal. And just like that, East Bengal FC, they are back. जिस तरीके से ये गोल हुआ, झट से एक फ्लैश की तरह इधर गोल हो गया और उसी के साथ स्कोर लाइन इधर इक्वलाइज हो चुका है। आज जिस तरीके से खेल रहे हैं दोनों ही क्लब्स, स्पेशली इतना ज्यादा ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में इसीलिए बात हो रहा है, ये वो क्लब है जो कि वाकई कुछ क्लब से 7 गोल 8 गोल से हारे हैं कभी कभार कुछ गेम्स। वो आज एफसी गोवा को क्लोजली टक्कर दे रहे हैं, वो भी आखिरी सिचुएशंस में जिधर एफसी गोवा खुद ही इतना सारा कॉन्फिडेंट है। एक और मौका, व्हाट अ गोल! बट डिफेंस क्या कहा था इधर एफसी गोवा का, वी डोंट नो। पास आया, क्रॉस आया, बीच में 2 प्लेयर खाली करा हुआ है, एम्बापे ने पास दिया रोनाल्डो को, रोनाल्डो फिनिश कर दिया। ना वैंडेसार आ गए, ना वैन डाइक थे, कौन कहा था, डिफेंस किधर था, कुछ पता नहीं चला। Sparring that awful defense there, but that attack so smooth, right? I loved it from East Bengal FC. They really carry on, just board that momentum train, right? They get it and they score a quick flurry of goals. And there we have it, folks. It's 54 minutes into the games. So much still remaining in this matchup. But East Bengal FC, they live to be happy for a little bit longer because FC Goa, they have conceded one and their one go down. Again, angered a little bit with Mbappe going for that step over, and just before they could do any more shenanigans over there, the defense just comes in through. But still, the attack resuming, and would want to keep recycling the ball over here with Captivia towards Jude Bellingham, a driven pass on towards Mbappe, and there you go, just beats through the defense, and he scores. What a nice equalizer scored by FC Goa as we are back level to ground zero, and kind of remnants of the previous game, and now also continuing in the co-op. एंड जिस तरीके से ये गेम चल रहा है उससे लग रहा है कि ये आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। रोनाल्डिनियो कोशिश इधर यही था कि इधर जो रन निकाले थे हकीमी को इधर पास थे, बट वो अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाया। डिफेंस में जरूर पहुंच चुके हैं, बट दोनों के दोनों इधर सेम जगह पे खेल रहे थे। रुडली टू बेलिंगम और 1-2s काफी शानदार किए थे वो गोल स्कोर करने से पहले, और एक बार फिर से वही ट्राई किया जा रहा है एफसी गोवा की तरफ से। लियोनेल मेसी को लेफ्ट विंग पे इधर खिलाया जाता हुआ, क्रॉसेस काफी शानदार निकाल सकते हैं या फिर कटिंग भी कर सकते हैं, बट इस बार पास रहने की था कोशिश,
बट डिफ्लेक्शन आएगा एफसी गोवा के ही प्लेयर से, इसी वजह से थ्रो इन मिलेगा ईस्ट बंगाल एफसी को। बट देखिए इस बार एफसी गोवा देख के लग रहे हैं कि वो अभी पूरा हाई प्रेस पे जाने वाले, वो और कोई सेकंड चांस देने की सोच नहीं रहे और आगे बढ़े। शानदार गोल था, ये बहुत शानदार गोल था। लेफ्ट पैर से बॉल को टैकल के आगे लेके गए और उसी के साथ एकदम लेफ्ट नेट पे फिनिश किया। ब्रैंडे सर के पास कोई मौका ही नहीं था कुछ करने का। You know, just that one little move there, you know, just shifting his legs, just taking it back and completely beating the defenders out there. East Bengal FC, they were left watching, kind of helpless, in agony, in a lot of pain, just mopping the floor. You could hear the scratches. You could hear them screaming. You know, they've been trying so hard. Akshat, he's been enjoying himself, but you could still see that steely demeanor being shown by Ben 07. He always has that serious fortitude. And there you go again, FC Goa. This time, wanting to go for a more powered shot, but not succeeding. The keeper right there in the near post has been fended off. But Virgil van Dijk, oh, this could have gone the other way. Had Mbappe beaten him over there, it was a clean shot, a clear shot on goal. He could have maybe scored that equalizer. And we know East Bengal FC can't really rule them out from here. You know, they've been in stellar form tonight. But FC Goa always looking one step ahead. You know, really just wondering where this match goes, because we'd also seen in the previous individual matchup, right? V. Sharma, in fact, conceded one goal, and suddenly it felt like no, that was it. That was the end of line in that individual matchup. Could maybe have to accept with a draw. But no, Adi Seema did have that final trick up his sleeve. But in this match, TT, क्या लगता है? कुछ खुराफात मचा पाएंगे क्या इस बंगाल एफसी? देखिए जिस तरीके से अभी तक गेम चला है, इसके पहले तो इतना कुछ लग नहीं रहा था जो अभी हो रहा है। तो अभी तो लग रहा है कि शायद कुछ हो सकता है। जैसे कि मैं पहले भी कहा था, एक ड्रॉ भी निकाल देते हैं फिर भी बहुत खुश होंगे इस बंगाल एफसी, क्योंकि अभी तक शायद ही कोई गेम गया है जिधर कोऑप पे हारे हुए एफसी गोवा, और एफसी गोवा का सबसे ज्यादा विन रेट उनके कोऑप पे ही रहता है। अगर वो पहला हार भी जाते हैं फिर भी कोऑप तो जीतते ही हैं। तो ये सिनेरियो रहा था। तो अभी के लिए जो सिचुएशन है काफी अच्छा है। मैं तो कहूँगा ईस्ट बंगाल एफसी को इधर बुरा मानने के लिए या फिर उनका सैड होने का कोई भी कारण नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने टक्कर दिया है अभी तक। और अभी के लिए एक और गोल होने के चांसेस है, हो सकते थे, बट इस बार शॉट जो है वो प्रॉपर है। ओह माय गॉड, ये अगर हो गया होता तो बहुत कोसते खुद को, क्योंकि जिस जगह पे उन्होंने बॉल छोड़ा था उधर बॉल मिल जाता तो एम्बापे क्या, उधर कोई भी हो जाए वो उधर से एक गोल तो स्कोर करता ही करता। Yeah, I mean, that would have been really difficult to deal with. And in the final 10 minutes of the game, anything could possibly happen. But for now, FC Goa trying to take the chance, trying to score a goal, but the defense quite tight. And East Bengal FC haven't really been in the control of this game. We haven't seen them getting on the driver's seat so far. They've always been playing that catch-up game against FC Goa, and that has sort of been concerning for me. I mean, the possession has been quite dominated by them, and East Bengal FC always having to rely on going on counter-attacks. And that sort of has been one of those causes of concern. But there you go! There you go! Have done it again! This time the duo of Akshat and Shantan score quite a last-moment equalizer. And this is where the storyline is being repeated, the history we are seeing once again being repeated. Do we see a late winner from FC Goa as they break in for an attack? Oh, nice pass on towards Erling Haaland, but this time the Van der Sar charge saved them from defeat. And now the final attack has hit on towards East Bengal FC, but do not have enough men. And hold on, we might have another attack for FC Goa. क्या बिल्कुल वो अटैक पे अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं विद एम्बापे, बट रूडुलिन अपने फिजिक का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आखिरी अटैक शायद ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से दिख सकता है। आखिरी कुछ मोमेंट, 1 मिनट बाकी, लेकिन फाइनल विसल इधर बच जाएगा।
और ड्रॉ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है ये गेम, वो भी कोऑप का, वो भी एफसी गोवा के खिलाफ, वो भी ये ईस्ट बंगाल एफसी ने किया है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईस्ट बंगाल एफसी, ये जो गैप उनको मिला था, बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा, स्पेशली ऑन देयर डिफेंस, जिसके बारे में हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका डिफेंस ही था सबसे ज्यादा कंसर्निंग पोजीशन। वो चाहे गोल स्कोर करे ना करे, इतना सारा कंसीड कर देते थे, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। बट फाइनली वो डिफेंस इधर वापस आता हुआ देखने के लिए मिला है। सो अभी सब कुछ डिपेंड करता है ये आखिरी गेम के ऊपर। आधी सीमा अगर ड्रॉ भी निकालते हैं, जो कि बहुत टफ है बेनो 7 के लिए कि वो आधी सीमा के खिलाफ ड्रॉ निकाले, फिर भी एफसी गोवा जीत जाएंगे। और अगर आधी सीमा हार जाते हैं, जो तो अभी के लिए सोच भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जिस तरीके से आधी सीमा का पूरा सीजन रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं। सब मिला के अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुका है इस पूरे मैचअप के अंदर। Yeah, I mean, definitely. And at this point, I mean, I'm deep down under, even I'm going to be rooting for East Bengal FC, no caps, because we want to see that surprise, we want to see that upset. But FC Goa, they still go on with their undefeated streak. I mean, at the worst, they can get is a draw, right? Not an L. So for making sure that East Bengal FC could have walked with a win, they ought to have won this one, which they could not. But still, making it equalized, and again, really good on their counter attacks, where FC Goa were constantly pressing, constantly looking threatening, but eventually it's the goals that matter. And those little moments where I think they kind of got carried away, right? They weren't that much vigilant, and that is where they found those cracks. And East Bengal FC did strike, and thunderstorms going around the course right now. This is an unanticipated result. We haven't seen FC Goa drop much of those co-op games, or maybe I don't remember last when I saw, or I remember that it was a draw. Right. Eventually, whatever, if the match went on to the third one, it had to be pretty much a decider. If FC Goa, in fact, if Panchaj had drawn a game or maybe lost one, that was the case, right? Because FC Goa have been literally the strongest club in terms of, I think, their co-op, along with a few more favorites. You could also count Mumbai City FC and Northeast United FC in, along with even Bangalore FC, the top fours, right? Other than that, they have been flawless. But yes, taking a quick look at the scorecard, and we'll see that their second matchup has been equalized. So V Sharma and Adi Zima, they do not look nigh unstoppable anymore, right? Akshat and Beno 7 have shown the world that yes, God still might bleed. So it all comes down to that final matchup, Adi Zima against Beno 7, and this is the perfect stage for Beno 7 to redeem himself. This is the perfect stage where he comes in, and if he manages to beat Adi Zima, he walks out with his heads held high, and every supporter of East Bengal FC at this point must be hoping for the same. बिल्कुल। और देखिए, जिस जगह पे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, सब लोग यही होप करेंगे कि आखिरी गेम, मतलब अभी के लिए जिस तरीके के सिचुएशंस बने हैं, इधर से ड्रॉ भी कोई भी क्लब ने अभी तक ड्रॉ भी नहीं निकाल पाया एफसी गोवा के ऑपोजिट पे। अगर जाते जाते ड्रॉ निकाल लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ईस्ट बंगाल एफसी के लिए वैसे भी अभी टाइटल रेस तो खत्म हो ही चुका है, तो जाते जाते अगर ये खुशी मिल गया तो भी काफी है। तो कहीं ना कहीं वो तो करेंगे। वैसे फिक्सेस आप क्या सोच रहे हो, मुझे पता है कि आपको एक फैन का चेहरा दिख रहा है मेरे मुंह पे, बट देखिए इतने दिन से कहीं ना कहीं इतने सारे गोल कंसीड करने के बाद एफसी गोवा के खिलाफ ऐसे परफॉर्मेंस करेंगे, वो तो कहने की एक अनएक्सपेक्टेड था। बट कहना चाहूंगा दोनों ने काफी बेहतरीन काम किया है, बेनो 7 एंड अक्षत ने। अभी बेनो 7 के ऊपर आता हुआ सब कुछ। बेनो 7 वो कहने की 80 KMB के मैच के बाद जिस तरीके से उनका थोड़ा बहुत प्रेशर ज्यादा लेने लग गए थे, थोड़ा हल्का फुल्का डाउनफॉल कह सकते हैं, वो हुआ था। उस जगह से क्या वो आज कमबैक कर पाएंगे? देखिए, जीतना तो दूर की बात है, अगर ड्रॉ करते हैं तो भी मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। क्योंकि इधर ये नहीं कह रहे कि बेनो 7 नहीं कर सकते, इधर इस लेवल के फॉर्म में ही चल रहे इधर कहने की आदि जीमा, जिनको रोकना आई थिंक कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए अभी तो बहुत ज्यादा टफ है। तो देखते हैं क्या होता है। Yeah, I mean, it's very difficult to get past Adi Zima, the final hurdle for East Bengal FC.
And this could be where their worst nightmares turn true, or maybe, you know, they turn their nightmares into a beautiful dream. A dream that could spark their next season's run and could make their hero now just pumping his chest over there, at least with a little bit of pride, a little bit of glory for all that it remains. And now, folks, this is the final matchup of this particular fixture. It is going to be FC Goa, Adizima from left to right, and East Bengal FC represented by Benno 7 from right to left. बॉल कंट्रोल तो काफी शानदार रख रहे हैं अभी तक ईस्ट बंगाल एफसी। शुरुआत में जो एक अटैक बन रहा था एफसी गोवा के तरफ से, उसको बहुत अच्छे से रोके। इस बार बहुत ज्यादा डेंजरस पोजीशन पे लेके आए थे बॉल, लेकिन बैक पास पे प्लेयर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बॉल कंट्रोल चला गया एफसी गोवा के पास। और आधी सीमा देखिए लेफ्ट हैंड साइड से रन निकल चुका है, यस, और एक बॉल भी गया, बट इसको संभाल लेंगे क्योंकि हकीमी है और हम जानते हैं कि हकीमी का कद ज़्यादा है और लियोनेल मेसी हाइट पे थोड़ा शॉर्ट है, तो जिसकी वजह से जो थ्रू बॉल्स है वो रिसीव करने में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो हुआ। लेकिन इधर बॉल छीनने में फिर से एक बार कामयाब होते हुए एफसी गोवा, और आधी सीमा के जो वो रन्स है वो तो फॉर श्योर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जो थ्रू बॉल्स वो खिलाते हैं यूजुअली, इसके लिए रेडी रहना होगा बेनो 7 को। राइट हैंड साइड पे हकीमी मौजूद, और विथ हकीमी कोशिश यही है कि गैप मिले जिसके थ्रू वो बॉल अपने अटैकर के पास, जो स्ट्राइकर है एम्बापे या रोनाल्डो, उनके पास दे पाए। बट अभी के लिए बॉल है रोनाल्डिनियो के पास। रोनाल्डिनियो बेहतरीन डिफेंडिंग, और इस बार बॉल चला गया था कैप्डेविया के पास। बॉल छीने और काउंटर पे जाएंगे बेनो 7। Now, what I would be really looking forward to is Benno 7's defense, right? Because it has been opened up on numerous occasions, and this time on that counter attack, maybe took a little bit of that extra time. Again, on that build up with Vieira and with Rugulet. Wanted to give it to Ronaldinho, but got a little impatient over there, which sort of exposes him to a counter attack, because we had that left back going ahead, which means Ronaldinho looking for options. Wait for that Trivela inside the box. Quite ambitious. Adizima, we haven't seen him do that quite often. We have seen Adizima, however, those German crosses, those long aerial balls come in, which have been nightmares for the other clubs. But this time, he brings in a little bit of variation. And suddenly, I think Benno 7 would have been caught off a little off guard. But Van der Sar came for the rescue as the attack still goes on. And he was quite patient with Eder Militao over there. Benno 7 उनका डिफेंस बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ पिछले, अगर 2-3 गेम्स की बात करें तो उसमें ये सब जो अटैक्स अभी वो रोक रहे हैं, इसमें वो गोल कंसीड कर रहे थे इस बार। बहुत ही हार्श टैकल, बट बॉल कंट्रोल रहेगा, पास में जाएगा, बट ज़्यादा पावर नहीं था पास में, जिसकी वजह से वर्जिल वैन डाइक के लिए बहुत ईजी था इंटरसेप्ट करना। बट देखिए आधी सीमा जिस तरीके से वो खेलना पसंद करते हैं, थ्रू बॉल्स वो अभी तक वैसे उतना खास निकला नहीं है, तो वो निकलेगा कब? आई थिंक सेकेंड हाफ पे वो ज़्यादा इधर थ्रू बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद उसके लिए भी वेट किया जा रहा है। तो ये जो बीच बीच में टैक्टिक चेंजेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आधी सीमा जिनके पास बहुत सारे एथलीट्स का डेटा से लेके स्टार्ट करके अगर देखा जाए, उनका मेंटलिटी, फिर उनका स्ट्रैटेजी, सब कुछ है, तो उनके पास तो टैक्टिक्स की कोई कमी होने वाला है नहीं। तो ऑब्वियसली वो कोशिश अभी चल रहा है, 30 मिनट का गेम हो चुका है, अटैक पे अभी भी बने हुए हैं, बॉल कंट्रोल काफ़ी अच्छा। बट देखिए बेनो 7 पेशेंस है, लाइक बेनो 7 की अगर बात करें तो बेनो 7 ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो वो गैप्स का इस्तेमाल किया जाएगा आधी सीमा की तरफ से, जो होल्ड कर रहे हैं कि तुम बॉल लेके आओ, फिर बाद में मैं देखता हूँ। And attempt at a driven pass there. This is where I think Benno 7 has really been shining, right? This time he has ensured that his defenses are not really all over the place, rather quite well structured, and the fortification is pretty much there, and it's evident because Adi Zima has been trying to knock on his doors, and on multiple occasions has been denied, and then goes for his signature pass, and wow, what a beautiful heel to heel, almost breaking free, but then the power in the attack, which was completely lacking over there, and East Bengal FC still haven't
conceded a goal, and they've been creating quite a lot of chances there. A few mistakes have been made, but that's okay as long as you're able to contain a player like Adi Zima. Is just not a player; he's a destroyer of dreams of a lot of clubs. He's already done that, has broken them into pieces, and now East Bengal FC still holding on, still breathing, and he's fighting back. But when does he score, or is it going to be too much for Ben 07 for him? For him trying to defend himself, and he concedes one eventually. But this time the storylines have been different, almost reaching the end of the first half, and neither of these clubs have managed to find an opening. बट इस बार शायद मौका बनेगा, बना भी और आदि जिमा ने गोल भी किया। आदि जिमा आज काफी ज्यादा एनिमेटेड दिख रहे हैं क्योंकि देखिए आदि जिमा का यूजुअली जिस तरीके से सीजन गया है वो शुरुआत में गोल स्कोर कर लेते हैं। इतना मुश्किल उनको कभी नहीं हुआ है डिफेंस में जाके, क्योंकि इतने देर से वो कोशिश तो कर रहे थे, डिफेंस को इधर भेज नहीं पा रहे थे, बट फाइनली उन्होंने भेजा। 1-0 का स्कोर लाइन बना, और ये सिर्फ ये गेम के अंदर नहीं, ये शायद तीन गेम से चल रहा है। वैसे फर्स्ट गेम के ऊपर तो बहुत सारे गोल्स ऑलरेडी स्कोर हो चुके थे, फर्स्ट हाफ खत्म होते होते 5 गोल्स, लेकिन पिछला जो कोऑप था उस पे भी जस्ट हाफ टाइम के विसल के पहले गोल किया गया था एफसी गोवा की तरफ से। इस बार भी जस्ट हाफ टाइम के विसल के पहले गोल किया गया एफसी गोवा की तरफ से, बट एक भी अटैक बनाने नहीं दिया गया है एफसी को, लाइक इधर ईस्ट बंगाल एफसी को एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं है या फिर शॉट भी नहीं है। तो आई थिंक इधर सिर्फ डिफेंडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे बेनो 7, बट सिर्फ डिफेंडिंग के साथ एक गोल ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं, सो अभी गोल स्कोर करने की जरूरत है अगर उनको इधर से 1 पॉइंट भी लेना है तो। Yeah, and that's looking pretty interesting to be honest at this point, because throughout the game we saw Adi Zima being tested so many of those times. Every single time he got on an attack, he'd been trying a lot of variations. We saw him even go for tripelas. We've seen him go for that German cross. We have seen him go for those direct passes onto trying to dribble and score a goal. And till the last attack, I think I must say Shantan has done such a good job in trying to keep him at bay. And this is exactly the Benno 7 that I was more accustomed to. This is exactly that Benno 7 that I'm pretty sure majority of the East Bengal FC fans, along with you, wanted to see for quite some time. But sadly, no matter, folks, whatever the outcome is, East Bengal FC at this point, would be really hurting at this point, because even if they manage to win this one, even if they salvage a draw, still won't change anything in terms of the overall standings. They still won't make it to the playoffs. बिल्कुल, देखिए इधर कहीं ना कहीं एक बार फिर से सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर तरीके से गोल स्कोर करेंगे। देखिए सेम कहानी चलता जा रहा है, वो भी स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं हुआ। पिछले गेम पे अगर बात किया जाए, एक गोल स्कोर किया, सेकेंड हाफ चालू होते ही पहले मिनट में इधर गोल कर दिया, उसके बाद सेम चीज इस पे भी पंतावार विद रोनाल्डिनियो। आज ईस्ट बंगाल एफसी ने बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई डोंट थिंक इधर और कोई भी जो है वो दुख रहेगा ईस्ट बंगाल एफसी के फैंस के मन पे, क्योंकि देखिए हाँ दुख तो है कि क्वालिफाई नहीं किए, बट हो जाता है कभी कभार, कोई सीजन जाता है इस पे आपका उतना खास आउटकम आता नहीं है, बट जो आखिर में वो एफसी गोवा के खिलाफ खेल के दिखा के जा रहे हैं, अगर वो आज नहीं भी जीते, अगर आज हार भी गए, फिर भी मुझे लगता है कि ईस्ट बंगाल एफसी एंड उनके फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए उनके गेम प्ले को देखते हुए एटलीस्ट, क्योंकि आदि जीमा, फिर उसी के साथ अगर बात किया जाए इधर वंशज की, ये दोनों जस्ट अभी तक अनबीटन थे, अभी तक एक भी ड्रॉ भी नहीं किया है। अच्छे खासे क्लब्स जो कि अभी टॉप 4 पे बैठे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है इधर नहीं रोक पाया एफसी गोवा को, बट इतना अच्छा टक्कर ईस्ट बंगाल एफसी देते हुए, और लियोनेल मेसी व्हाट अ गोल! ये सिर्फ शायद कुछ ही प्लेयर कर सकते हैं, और वो भी आदि जिमा के कंट्रोल पे। उनमें से एक है लियोनेल मेसी, घूमे, टर्न किए, पोजीशन नहीं था, राइट फुटेड था, गैप से निकाले और गोल भी हुआ। 2-1 एफसी गोवा एक बार फिर से लीड बना चुके हैं, और ईस्ट बंगाल एफसी फिर से
उनको चेज करना होगा इधर। इस बार थोड़ा ट्विस्ट है कहानी पे, क्योंकि बार बार जो सेकंड गोल है वो सबसे पहले कर रहा था ईस्ट बंगाल एफसी, बट एफसी गोवा की तरफ से आया है इस बार। बट बेनो 7 ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी लाइक डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए हैं। एक जर्मन क्रॉस, बट उस जगह पे ऑलरेडी डिफेंस चौकन्ने थे, तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स उतने खास कुछ क्रिएट हुए नहीं। लूसियो टिविएरा, अशरफ हकीमी, रोनाल्डिनियो के साथ बहुत अच्छे खासे यादें आज के दिन के लिए तो बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोल स्कोर किया गया था, एक और मौका बनता हुआ दिख रहा था, बट बेहतरीन डिफेंस आधी सीमा की तरफ से। और जो डिफेंस का प्रदर्शन इधर देखने के लिए मिला है वो काफी अच्छा था, क्योंकि अगर उधर बॉल नहीं छीनते तो एक पास था और फिर उसके बाद फॉर श्योर एक गोल आता हुआ देखने के लिए मिलता है ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। Yeah, I mean, this is where I'm sorry to cut you off, TT. I felt, this is where I guess, Beno 7 must be kicking himself in the feet, right? He scores one, then concedes one. This is kind of, in fact, hasn't really, made his presence felt till now. He has to do that in this particular chance, but no, has been kept at bay. वाह, देखिए पिछले हाथ से तो काफी शानदार अटैक कर रहे हैं अभी के लिए बेनो 7, लाइक पिछले हाफ पे सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, इस बार हाई प्रेसिंग करते हुए दिख रहे हैं कभी कभार, बट डिफेंस इसी वजह से थोड़ा आगे भी आ चुका है। बीच में जो चेंजेस हुआ था उनका डिफेंस लाइन को थोड़ा जो है वो पुश कराया गया है, जिसके थ्रू अटैक्स और अच्छे से बन पाए, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखे प्लेयर्स का। एंड वही चीज़ कहने की देखने के लिए मिला है। सो लेट्स सी इसके बाद इस तरीके का आउटकम इधर निकल के आता हुआ दिखता है, बट मुझे लग नहीं रहा, देखिए इधर फिक्सेस कि आधी सीमा बिल्कुल भी चाहते हैं कि वो बॉल दे, क्योंकि बॉल कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चला है कि एक छोटा से भी गलती और जिस तरीके से बेनो 7 खेल रहे हैं तो मे बी वो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। राइट हैंड साइड से दौड़ते हुए ये पास मिलेगा, क्या वो फिनिश कर पाएंगे? Oh my God. Oh my God. Got a feel for Beno 7 at this point. This could have been a golden opportunity to have tried to draw a game, because, for Beno 7 to salvage even a single point, they have to go on with a win, right? And that's something that's not happening for them so far. And to do that, they have to score not just one, but two goals from around here. A mere draw is not going to change anything. It will be that victory for V Sharma that settles the score, and FC Goa still remain unbeatable, still win and take home those 3 points. So at this junction, I think in fact, Beno 7 needs to make a few changes in his formation there. I think go maybe 3-4-3, or we even seen 4-2-4s. So go full out on that attack, a little bit of that constant press. And, I think history is a testament where we've seen the fact that players have managed to score not just two, but three goals even in those final 10 minutes. So something of that, if we get to see, I think Beno 7 reclaims or, redeems himself to be the hero for East Bengal FC once again. बिल्कुल, अभी भी 13 मिनट बाकी है इनके पास। क्या 13 मिनट में कुछ हो पाएगा? देखिए माल्डिनी को लेके आया गया है, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर देखने के लिए मिल रहा है, और जैसे कि आप कह रहे थे कि हालैंड इधर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो वो आया भी है। रोनाल्डिनियो का रन था, आधी सीमा भी शायद एक्सपेक्ट किए थे कि रोनाल्डिनियो के लिए पास जाएगा, बट उतना जल्दी पास किए नहीं। माल्डिनी आते ही एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंटरसेप्शन दिखाते हुए, बट विद हालैंड जिस तरीके से काउंटर पे जा रहे आधी सीमा, रोकना मुश्किल होगा, बट फाइनली आखिरी मोमेंट पे वो बॉडी पुश की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल गया बॉल, जिसके थ्रू इस बार के लिए काउंटर तो बचा चुके हैं, बट काउंटर पे बेनो 7 बीच में हालैंड वो हेडर कहीं से भी मार सकते हैं, वी नो। एक पास बहुत अच्छा मौका, बट गोल इधर आ नहीं पाया। TT, how did he get away with this? Adizima clearly must have felt that little jolt through his body, because that is where I literally saw an equalizer. Oh, Beno 7 at this point must be gassed out, right? The remainder of 5 minutes and 2 goals to score. Quite an impossible task. And
the previous attack by FC Goa with Erling Haaland, you could see that lengthy play making those longer strides. I mean, those strides, were I think every single one measured a meter at least. The way Erling Haaland was running for the ball. And now I think East Bengal FC, they've gone for a more narrow approach, 4-1-2-1-2, and Adizima's gone quite defensive, 5-4-1 for him. So at this point, quite difficult to get in, and we've seen on those numerous occasions that Beno 7 has been utilizing his wings a lot, and he almost scored a goal. I mean, Van der Sar has to be the MVP of saving this. Otherwise, it would have been a draw. यस, आज जिस तरीके से देखिए बार बार वैन डे सार की तरफ से ये सेव्स आया था, वो काफी अच्छा था। कहते हैं ना, कभी कभार जो आपका वो गोलकीपर है, वो आपको हरा भी सकते हैं, आपको वो जिता भी सकते हैं। जिस दिन वो फॉर्म में आ जाते हैं, वो अलग ही फॉर्म पे परफॉर्म करते हैं, और आज वो कुछ लेवल का गोलकीपिंग देखने के लिए मिला वैन डे सार की तरफ से। बट एज ऑफ नाउ आखिरी 90 मिनट्स का गेम हो चुका है, फिर भी बॉल छीनने में कामयाब तो हुए, बट बहुत जल्दी जाना होगा आगे, नहीं तो फाइनल विसल बच जाएगा। आगे भी गए, बॉल कंट्रोल पे भी है। जिनोला टुवर्ड्स रोनाल्डो, एम्बापे, रोनाल्डो, फाइनल मोमेंट गोल। हालांकि इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इस पूरे मैचअप के, लेकिन जाते जाते बेनो 7 ड्रॉ करके गए आदिजिमा के खिलाफ, और फाइनल विसल अभी बच जाएगा, नो डाउट ऑन दैट। वाओ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम द साइड ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी। Yeah, I think they might have lost this game, but I'm pretty sure they must have won a lot of hearts, not just from East Bengal FC's supporters, but also from the other clubs. The resiliency that has been showcased by both Beno 7 and Akshat is something to be applauded, but a little too much for the gods. I mean, these lads, they had been tested. I'm pretty sure this was a tight game. They had not seen this one coming. Maybe got a little complacent because I almost saw them dropping points over there. Now imagine TT had he scored the previous attempt and then could have scored that winner. This could have been a huge upset for FC Goa. For the first time ever in eISL Season 2, they might have had to settle with a draw. A certain feat which no other club has managed to achieve. Every single time, they have bested out every single one of them. But tonight, again, it is that individual victory, the first matchup of B. Sharma, that secures them home those 3 points. And FC Goa literally untouchable with just one more match remaining. No matter even if they drop that, it's still not going to change the outcome, that they go into the playoffs with the highest points in their bags. फॉर श्योर। और देखिए जिस तरीके से ये गेम गया है, और आपने सही कहा कि इधर सिर्फ ईस्ट बंगाल एफसी के नहीं, बहुत सारे क्लब्स के जो है वो दिल जीत चुके होंगे, बट उसी जगह पे अगर देखा जाए इधर एफसी गोवा के तरफ से, तो एफसी गोवा ने भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया था। और थैंक्स टू वी शर्मा कि उन्होंने आखिरी वो 88 मिनट में गोल स्कोर किए थे, नहीं तो पूरा का पूरा जो है वो तीनों के तीनों गेम्स ड्रॉ जाते हुए दिख सकते थे, और ये पहला ड्रॉ हो सकता था एफसी गोवा के लिए। एफसी गोवा शायद इसके पहले इतना ज्यादा क्लोज गेम्स नहीं खेले थे, और शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इतना ज्यादा क्लोज जाएगा, बट आज वो डिफेंस में गैप्स देखने के लिए मिले। देखिए स्कोरबोर्ड आ चुका है, 5-4 के साथ शुरू हुआ था, जिधर अक्षत पहले हाफ पे बहुत ज्यादा सरप्राइजेस दिए वी शर्मा, फिर उसके बाद आखिर में जाते जाते दिखा के गए कि हु इज द बॉस ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद जाके कोऑप पे जिधर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एफसी गोवा, उधर ड्रॉ निकाला, देन आखिरी गेम भी ड्रॉ निकलता हुआ देखने के लिए मिला। बट एफसी गोवा आई थिंक जस्ट फाइनल्स पे, लाइक प्लेऑफ्स पे जाने से कुछ दिन पहले जो सेकंड लास्ट गेम है, इस पे अगर उनके गैप्स ऐसे मिल रहे हैं तो इसका पूरा फायदा उठाया जाएगा बाकी के क्लब से। Yeah, I think I'm pretty sure a lot of clubs must be watching. There are a lot of players because this is FC Goa's matchup, and everybody needs to make their certain preps, and they need to be ready for the playoffs, right? For the top 4 at least, they know they have cemented their spot. But B. Sharma,
that final goal in those mere minutes remaining, that winner manages to get him not just the MVP but also went on to become the decider, right? And they take home those 3 points. But what a battle, what a fight being put forth by East Bengal FC. Applauses for such an effort. And had this East Bengal FC, I mean, at this point, we kind of tend to hope that I kind of feel like it's a bit unfair because, ever since that break, we never got to see East Bengal FC in action. Had they not exhausted majority of those games when their bad form was continuing, had they taken that little pause, if they had that luxury, and if they had their matches around the past 2 weeks, I'm pretty sure this could have also been a club that would have still been in the race. But yes, B Sharma just one step ahead, and FC Goa taking home those 3 points by narrow margins. I mean, that I think everybody is going to agree with, because no matter whatever the possession was, how well you were playing, unless you score a goal, it still doesn't count, right? So at this point, FC Goa, yeah, this was one of those outcomes that we knew sort of would happen, but we completely did not see the way it happened coming, right? We did not expect East Bengal FC to try and get a draw in 2 games out of 3, and that is where I think FC Goa might feel a little bit nervy. Are they gassing out on their unbeatable run, because tomorrow they have their final game remaining, and that is going to be an absolute blockbuster. But that being said, folks, we are done with this fixture. Right now, what we're going to do is take a short little break, because coming right after, Dhamaka hai boss. Oh,